अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं ज़िया अब्बास। अपने लास्ट एपिसोड के बाद आपके सामने सेकंड एपिसोड के लिए हाजिर हूं। थैंक यू वेरी मच। लास्ट एपिसोड्स में हमने अपना ईमेल आपको दिया जिस पे हमें बहुत सी ईमेल्स आए और आने वाले एपिसोड्स में हम आपके ईमेल्स को एक सेगमेंट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। उन ईमेल्स में एक ईमेल को हमने पिक किया जो अहमद साहब ने भेजा था। उसमें क्वेश्चन था कि वाई रीमैक्स, हम रीमैक्स के साथ क्यों काम करें, हम दूसरे ब्रोकरेजेस को क्यों इस्तेमाल ना करें, उनके सर्विसेज को क्यों यूटिलाइज ना करें। तो हमने सोचा कि अपने प्रोग्राम को आज हम क्यों रीमैक्स ओंटारियो अटलांटिक से ही स्टार्ट ना करें, जिसमें हमें ज्वाइन करेंगे गुरिंदर संधू जो कि एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एंड रीजनल मैनेजर है रीमैक्स ओंटारियो अटलांटिक के। उससे हम सवालात करेंगे। लेट्स गो, प्लीज ज्वाइन। So Gurinder, welcome to the program. In our last episode, out of those emails, we picked one email, and one of the audience did ask us why Remax. So we said, might as well come and talk to the Vice President of Remax Ontario Atlantic to find it out why Remax. Well, first of all, Zia, assalamu alaikum to you and your audience. It's a pleasure to be here. Thank you for having me. And I know, like everything else that you touched, this program is going to be an incredible success. So why Remax? Well, what I can tell you is it's basically because of our realtors, such as yourself. Our realtors are the most experienced in this industry. And it's not just us at head office saying that. It's when there's studies done on the industry, it's these external studies that prove that Remax realtors are the most experienced in the industry. One of the most recent ones, done by a company called RealTrends, a third party out of the US, when they looked at real estate brokerages, the top 250 in Canada, they found that the realtors out of those top 250 brokerages in Canada, the Remax realtors were over 60% more productive. That means that they sell more real estate. That means that you sell more real estate. And with that experience, our realtors are able to provide the best possible value for people who are trying to sell their property and are able to negotiate the best possible value for buyers. So that's why people should choose Remax. That's why Remax. And Remax realtors, how they would be able to go extra mileage? Well, what we at Remax pride ourselves in is we've become the biggest brand in real estate in not only Canada but around the world. When people think of real estate, they think of Remax first. And why is that? Well, when we look at all of the different things that are, like aside from our realtors being the best in the industry, when we look at all of the things that we at head office do, we spend we invest more than any other real estate company in Canada and I'm sure around the world in marketing and branding ourselves to make sure that when people think of real estate, they think of us first. So if you look at sports stadiums around Canada, you'll only see Remax. If you look at the home shows around Canada, you'll only see Remax. You look at anywhere where there's marketing and branding, you'll only see Remax. And that's what creates this top of mind awareness. And that goes a long way so that when buyers and sellers are looking for realtors, they're thinking about their local Remax realtor first. And the investment just doesn't stop there. We invest an incredible amount of money to ensure that our realtors have the best possible marketing tools that exist in the industry today to make sure that they expose the property in the best possible way for our buyers and for our sellers. So it's those kinds of things that have created this incredible brand in Canada as we see it today. Well, definitely, Gurinder, the perception among the viewers is if you can go and have 3 tests and become a realtor, your job is done. No, that's the initial point to start from. And then I believe, end of the day, the brokerage, the brand, that's the actual platform where you can learn a lot. Absolutely. I think getting the actual, going through the actual testing in the industry is just the very first step. And the career really starts from there. And with our training and our tools and all of the things that we have at Remax, we believe that our realtors over the years, the experience that they've gained and what it is that and it's that experience that's key.
right? Because at the end of the day, a buyer wants to get the best possible value, or a seller wants to get the best possible value when they put their property on the market. And we at RE/MAX, we're the only global real estate brand in Canada as it stands today, or truly the global real estate brand. And when you look around this great country, people like yourselves, like myself, we weren't born here. We were born somewhere else. Exactly. That's what makes Canada the best country in the world, right? And so it's this, as this global village gets smaller and smaller, the value of a global brand gets bigger and bigger. What do I mean by that? Well, we know in real estate that if you give your property the best possible exposure, the most possible exposure, you're going to get the best value. Right? Yep. And at RE/MAX, we've got tools and we've got the ability to expose properties around the world like nobody else. And it's those are the kinds of things that our realtors are leveraging with this global brand. And that's why we are where we are today. And what does the future hold for RE/MAX? Well, what the future holds for RE/MAX is we at head office, there's 35 people at head office here where we are today, and we're absolutely committed to make sure that we provide our realtors with the latest technology, with the latest marketing tool, all of the things. Our industry is changing every day, and we make sure that we have a pulse, that we make sure that we have our eye on the pulse of what is happening in the industry through discussions with people like yourself and our brokers and throughout the industry. And so we're going to make sure that whatever the future holds, that we are going to be the leaders, and our realtors are going to be the leaders in this industry. Wonderful. And since we both belong from a South Asian community, what you can say at the end when it comes to a community, once it comes to the community realtors as well? Well, the South Asian community has created an incredible presence in Canada. If we look at Toronto specifically, I think approximately 1/6 of the community in Toronto is of South Asian background. And I'm incredibly proud of what the heights that our community has reached. Look at yourself, Zia. You are the biggest realtor in the RE/MAX worldwide. Those are the kinds of things that make me so proud to be part of this community and part of what is great about this country. Thank you, Gurinder. ये थे गुरिंदर सैंधू, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट RE/MAX ओंटारियो एटलांटिक। ब्रेक पे जाने से पहले ये ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि ब्रेक के बाद हम जाएंगे कॉन्टेस्ट डेवलपमेंट से बातचीत करने। Stay tuned, we'll get back to you. Where Tribute really makes a difference is in the quality. The warranty's there, but you won't need it. My Tribute. Outstanding quality for complete peace of mind. A tradition of excellence for over 30 years. My Tribute. Visit mytribute.ca. ABN is a full-service boutique accounting firm. ABN can provide you with a range of financial and advisory services that can help create, build, and protect value. See beyond the numbers. CPAs can do so much more. Abrahams LLP. We provide services in corporate law, civil litigation, and real estate. We are lawyers to Toronto's entrepreneur. Work, play, love. Life comes together when you find your way home. Come home to Toronto's new urban living at King & Strachan. Featuring condos, townhomes, shops, parks, and more. Get to the point at garrisonpoint.ca. For over 20 years, Baker Real Estate has been proud to represent the most successful new construction condominium developers in Toronto. When you buy through Baker, you know you've bought the best. One name stands apart in the real estate world, Zia Abbas.
वेलकम बैक नाजरीन। जैसे ब्रेक से पहले मैंने कहा था कि कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के क्रैक टेलर से हमारी मुलाकात होगी। इस वक्त हम 1 यॉर्कडेल रोड पे हैं, जहां ये वी आर नेक्स्ट टू यॉर्कडेल मॉल। तो हमारे साथ क्रैक टेलर है। लेट्स टॉक टू क्रैक लाइक यू नो अबाउट कॉन्टेस्ट डेवलपमेंट, सम सक्सेस स्टोरीज। हाय क्रैक, thank you very much. Thank you for coming in the program. And my first question to you is about the contest development. As I work with contest quite like you know a bigger volume, like you know I did with Harvard, like from his platform, and success stories such as Market Wharf as well as Library Condominiums we did, and now you guys are going to launch another project as well. But before we jump in, can you just tell the viewers a little bit about contest development, and it's been how many years they are in this industry, and what are their success stories? Sure. Well, we have been in business since 1997. The company was founded by Howard Cohen, who you know well, and Stephen Gross. We're now working on I believe our 15th building. We've done over 3,000 units, and the last couple of projects, Library District and Market Wharf, have been great successes for us, and you've been a big part of that as well. Wonderful. And how many units has been so far in total, approx? 3,000. Well, 3,000 units. Yeah. That's great. Great. Yeah. And another thing is, I know Contest is a very customer care oriented. Like you know, the product which you guys develop, like you hand it over so well, and there was always like you know room for a true end user and for an investors, like you know just to make some sort of a good return. Yes. And like you know I did complete my cycle with Contest like you know very well. Tell us more about the upcoming project, the Yorkdale Condominiums, which is going to launch. South Asian viewers are quite eager to know about this upcoming project. So we're very excited. This fall we will be launching the Yorkdale. It's 2 buildings at Yorkdale Mall on both sides of the Allen Expressway, which we can see behind us here. We're immediately beside the Yorkdale subway platform, which is very exciting for us. We're the only condo at Yorkdale Mall next to the platform, the subway. You'll be on the subway in 1 second, and you're downtown right away. Or you're at Yorkdale, you're at York University, U of T. So it's a great location for us. And we're very excited to be launching it. We're working with a great architect. We're bringing a very high design to North York. I mean, Context is known for our design work, the architecture. Our buildings stand out. And we're very excited to be bringing it from downtown uptown. We're usually a downtown developer, but we're moving out of the downtown now. Yeah, very well said. And to be quite honest, I've seen the floor plans, and then I can tell I'm the best witness to say, you know what a great functional floor plan. Thank you. You guys use the spacing very well, like you know, based on the need and niche of like you know this particular market in this area. And where we stand at this point in time, we are next to Subway, we are next to Yorkdale Mall, we are next to 401, and I read somewhere that from this particular location, you would be in University of Toronto downtown campus within 13 minutes. Is that true? That is true. That's true. That was actually estimated according to the TTC. So that's not marketing, that's not the developer, that's the Toronto Transit Commission estimating that. And you'll be within York University. They're building a new subway line right now. And by the time our building is complete, you'll be at York University. The subway will be in place, and you'll be there in 5 or 10 minutes as well. So you can go up to York or right downtown within between 10 and 15 minutes. The Yorkdale condominium, right? The project. Contest Development has also a partner on this project. Can you talk about your partner as well? Absolutely. This is new for us. Usually, as you know, it's just context, but for this project is such a big project, and it's a multi-phase project over years. We've teamed up with another partner. It's a company called Metropia, which maybe a lot of your viewers will know. They're doing high-rise condos in downtown Toronto now. Metropia is a relatively young company, but they have a very established history. The owner of Metropia, the founder, is a gentleman named Howard Sokolowski, who was a co-founder of Tribute Homes. He's built over 30,000 homes over the last 25 years. So his history is very established, and he has a lot of experience in the low-rise and high-rise. Context, we're known to be a downtown high-rise builder. This site, in addition to high-rise, will have some low-rise as well, and because it was so big, we felt it was important to team up and create the dream team. So it's Context and Metropia. Wonderful, Craig. नाज़रीन, जैसे आपने क्रैक से सुना कि ये जो पर्टिकुलर लोकेशन है रेडियस, इट इज़ सो कन्वीनियंट टू ऑल द लोकेलिटीज़.
यस अगर आप डाउनटाउन में कॉन्डोमिनियम लेंगे $650-700 कॉस्ट पर फुट, तो वो आपको यहाँ इस लोकेशन पे बहुत ही कम प्राइस पे मिलेगी। यही आइडिया है कि इन्वेस्टमेंट्स वहाँ होनी चाहिए जहाँ पे सबवे हो, इन्वेस्टमेंट वहाँ होनी चाहिए जहाँ पर एक्सेसिबिलिटी मॉल की हो, हाईवे की हो, एंड एंड ऑफ द डे जो इन्वेस्टर है अगर उसने रेंटल में जाना है, बेस्ट ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर फ्लिप ओवर करना है, सेल करना है, या लॉन्ग टर्म पे आपने टेनेंट से अपना मॉर्गेज पे ऑफ करना है। सो माई जॉब इज़ टू ब्रिंग यू अ गुड वैरायटी एंड द बेस्ट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो कि इस वक्त यॉर्कडेल कॉन्डोमिनियम में आपको ये वैल्यू मिलेगी। और जो आप इस प्रोग्राम में देख रहे हैं यॉर्कविल कॉन्डोमिनियम के हवाले से, You are indeed the first viewers to see everything। और यही मेरा काम है इस प्रोग्राम में कि मैं आपको इतनी इन डेप्थ इंफॉर्मेशन हर जगह से ला के दूँ ताकि आपको हर इन्वेस्टमेंट के हवाले से, हर इन्वेस्टमेंट जो प्लेटफॉर्म है वो आपको सबसे पहले मिले, एंड देन आपके पास नॉलेज और इन्फॉर्मेशन हेड ऑफ टाइम आए बिफोर लाइक यू सर्च हियर एंड देयर। जाने से पहले एक लास्ट क्वेश्चन क्रैक से ज़रूर करूँगा। सो क्रैक, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। माई लास्ट क्वेश्चन इज़ कॉन्टेस्ट डेवलपमेंट, हाउ कॉन्टेस्ट डेवलपमेंट कैन सी साउथ एशियन community as a potential clientage of contest development? So I'll just really quickly tell you the experience. Most of the buildings we've built, we focused on end users, and then several years ago we decided to diversify a bit. We have a very a good following of end users, and we started working with agents such as yourself and reaching out to the overall investment community, and a big portion of that is the South Asian community, and we started working with that community at Market Wharf, and it was a big success right downtown Toronto at St. Lawrence Market. And then we worked in with our project Library District condominiums. So the South Asian investment community is probably the most dynamic, growing segment of the market right now. And I think Yorkdale will be a great place for that community to invest because of the location, the transit. थैंक यू क्रैक। नाज़रीन, जैसे आपने देखा कि क्रैक के साथ ये हमारा इंटरव्यू था, एंड एक क्विक ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक से पहले आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो हमारे नेक्स्ट गेस्ट है वो एक न्यू इमिग्रेंट फैमिली है जो कि कामरान एंड मदीहा है। उनकी स्टोरी हम सुनेंगे, उनकी अपनी ज़ुबानी, कि वो कनाडा में आए और उन्होंने अब तक क्या कुछ किया, जो कि आपके साथ शेयर करेंगे। स्टे ट्यून्ड एंड सी यू आफ्टर ब्रेक। Where Tribute really makes a difference is in the quality. The warranty's there, but you won't need it. My Tribute. Outstanding quality for complete peace of mind. A tradition of excellence for over 30 years. My Tribute. Visit mytribute.ca. ABN is a full-service boutique accounting firm. ABN can provide you with a range of financial and advisory services that can help create, build, and protect value. See beyond the numbers. CPAs can do so much more. Abrahams LLP. We provide services in corporate law, civil litigation, and real estate. We are lawyers to Toronto's entrepreneur. Work, play, love. Life comes together when you find your way home. Come home to Toronto's new urban living at King and John. Featuring condos, townhomes, shops, parks, and more. Get to the point at garrisonpoint.ca. One name stands apart in the real estate world, Zia Abbas. For over 20 years, Baker Real Estate has been proud to represent the most successful new construction condominium developers in Toronto. When you buy through Baker, you know you've bought the best.
I'm Lisa, and this is your buy low, sell high tip of the week. Make sure you know your builder. Make sure they have a proven track record and they build quality products. Not every developer is equal, and experience speaks volume. It's very important to consult with your trusted realtor, preferably one who specializes in pre-construction. Back to you, Zia. वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद इस वक्त मेरे साथ कामरान और मदीहा है, और अभी अभी मुझे कामरान से पता लगा कि आज इनको कंप्लीट 1 साल हुए इस घर में। सो ये इनकी एनिवर्सरी है, होम एनिवर्सरी टुडे। तो इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान, मदीहा, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला, और बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आज आपका 1 साल कंप्लीट हुआ घर का। तो मैंने तो बड़ी चेंजेस देखे हैं आपके घर में, और आपने बड़ा अच्छा रखा हुआ माशाल्लाह, लाइक यू नो यू डूइंग सो वेल। तो मकसद ये है कि नाजरीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको ये बताना है कि आप डेफिनेटली, मेरे लिए तो एक सक्सेस स्टोरी है कि आपने माइग्रेट किया, आप कनाडा आए, और इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपका जो मूव था वो राइट डायरेक्शन पे था। तो जब आपके जहन में ये आया कि अब हमारी अपनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, हमारा अपना घर होना चाहिए, तो 2 ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो आपके जहन में पहले आई कि मतलब एज ए रिक्वायरमेंट से पहले डेफिनेटली एक बजट होता है, राइट, कि आपका एक सेट बजट होगा, और बजट के अलावा कि आपकी एक सेट मंथली पेमेंट होगी, ठीक है जी, हमें अपने बजट को क्रॉस नहीं करना चाहिए, और हमें अपने जो है बजट के अलावा मंथली पेमेंट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। लेकिन जो रिक्वायरमेंट्स है वो रिक्वायरमेंट्स क्या थी, और हमेशा कपल के बीच में मैंने ये देखा है जो रिक्वायरमेंट्स है वो डिफरेंट है। तो आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स थी? जी, मैं तो जिस तरह आपको याद होगा, आपको मिली थी तो मैंने फर्स्ट टाइम आपको यही बोला था कि आई नीड यू नो पीपल फ्रॉम आवर ओन कम्युनिटी, और यहाँ के मतलब अपने कल्चर के, अपनी कम्युनिटी के लोग होने चाहिए करीब में। एंड देन सेकेंडली मुझे था कि स्कूल करीब हो, क्योंकि आई डिडंट यूज्ड टू ड्राइव एट दैट टाइम, तो मतलब स्कूल वॉकिंग डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो मेरी तो यही 2 रिक्वायरमेंट्स थी। और कामरान आपकी क्या रिक्वायरमेंट थी? क्योंकि मुझे सबसे पहले देखना था बजट, Exactly. तो बजट, और फिर उसके बाद मंथली जो मॉर्गेज पेमेंट्स वगैरह और सारा कुछ। तो सबसे पहले बजट एक सेट हुआ, आपसे कांटेक्ट किया, आपको बताया गया कि ये मेरी रेंज है, इसके अंदर हमें घर चाहिए। और बीइंग एन आर्किटेक्ट ऑफ कोर्स मुझे वो घर चाहिए था कि एक डिटैच हाउस हो और मॉडर्न हो, बहुत ज़्यादा उसकी एज ना हो, और कम्यूट सबसे बड़ा चीज़ थी कि 401 या हाईवे के क्लोज हो, क्योंकि ऑफिस जाना आना है। तो यही चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की, तो आपने फिर उन सब चीज़ों को, हम दोनों की रिक्वायरमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए देखा है। हाँ जी, वो इनका भी हो सही। तो सब कुछ यहाँ से सब कुछ हमें 1 किलोमीटर से भी कम पे है। हाँ, तो बेसिकली जब आपके जहन में ये आया कि चलें अब हम ओनरशिप की तरफ चलते हैं, घर लेते हैं, तो आपने ये कैसे डिसाइड किया कि काम किसके साथ करना? हाँ जी, क्योंकि देखिए there was no question in our mind, you know. We used to see, you know, you used to see you on the TV also, and we know you know, आपके रेफरल्स इतने स्ट्रांग थे, and your good credentials, and you know, तो वो तो हमारे जहन में और कोई क्वेश्चन नहीं था कि सिर्फ आप कि मतलब टोटली डिपेंड कर सकते हैं उनके ऊपर और ब्लाइंडली मतलब ट्रस्ट कर सकते हैं। और एंड ऑफ द डे जब आपका ये सारा काम हुआ, तो ज़ाहिर एक चेक लिस्ट है, राइट, उस चेक लिस्ट में 10 आइटम भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, तो उनमें से कितने पे टिक मार्क यस है और कितने पे नो? हमारे एक्चुअली कुछ ज़्यादा हो गए, जो हमने रिक्वायरमेंट्स थी उनसे ज़्यादा उसकी चीज़ हमें बोनस में मिल गई, जिस तरह यू नो वॉकिंग डिस्टेंस टू द बीच, वो हमें पता नहीं था, आइडिया नहीं था कि वो इतना ज़्यादा वो फन है। पार्क, राइट, जी, पार्क है, और वैसे यहाँ पे बहुत और भी फैसिलिटीज़ हैं नियर बाय, यू नो, कम्युनिटी सेंटर्स एंड ऑल दीज थिंग्स, इवन हॉस्पिटल बिल्कुल करीब है, वॉकिंग डिस्टेंस है। मैंने ये देखा है कि जो फर्स्ट टाइम इमिग्रेंट होते हैं वो बड़े, जब वो फर्स्ट टाइम ओनरशिप पे जाते हैं तो बहुत डरे होते हैं, बहुत शेकी होते हैं, हमारे साथ ये ना हो, जॉब ना जाए, ये सारी चीजें ये बहुत बिल्कुल थी हमारे साथ, इसी वजह से बल्कि हमने शायद 1 साल और डिले किया। we were supposed to you know buy a property 1 year ago, लेकिन हमने थोड़ा सा डिले किया। जब आपसे हमने कांटेक्ट किया तो आपने हमें यही बताया था कि यू नो यू हैव टू टेक रिस्क इन लाइफ, अगर आपने सक्सेसफुल होना है तो यू हैव टू टेक अ बिग स्टेप, यू नो, तो अगर डरते रहेंगे या वो तो फिर जाहिर है। तो 1 साल के बाद कैसे फील हो रहा है अभी? बहुत अच्छा फील हो रहा है। मेरी फीलिंग्स थोड़ी सी और है कि मुझे ये फील हो रहा है कि मैंने थोड़ा लेट कर दिया है, मुझे 1 साल पहले वो डिसीजन लेना चाहिए था। व्हाट्स नेक्स्ट नाउ? नेक्स्ट ये कि अभी कुछ इन्वेस्टमेंट का सोच रहा हूँ, तो आपको दोबारा मुझे लगता है कांटेक्ट करना पड़ेगा वेरी सून। तो कुछ कॉन्डो वगैरह मार्केट में, बिकॉज अब
کینیڈا ہی ہمارا کنٹری ہے, یہاں موو ہو چکے ہیں, اور آگے اب بچوں کا فیوچر وغیرہ دیکھنے کے لیے آئی تھنک ریئل اسٹیٹ ایک اٹ از دا اونلی مارکیٹ ویئر وی کین انویسٹ اینڈ وی کین بلڈ. اور بچوں کے لیے تو اس سے بہتر اور کیا گفٹ ہو سکتا ہے. اور میرا نہیں خیال ہے بالکل ہم لوگ یہ ڈر رہے تھے تھوڑا کہ یہاں پہ سیونگز نہیں ہے, اور مطلب اس طرح سے جس طرح میرا لیسٹ وغیرہ میں ہوتی ہیں, لیکن یہاں کے ہمیں پتہ چلا کہ آپ مطلب اس سے کہیں زیادہ آپ بہت ریئل اسٹیٹ میں آپ بہت سیو کر سکتے ہیں. ونڈرفل, تھینک یو مدیحہ, موسٹ ویلکم. ناظرین, جیسے آپ نے دیکھا کہ کانفیڈنس آن دیئر فیسز ان دیئر جیسچر, یہی ہم چاہتے ہیں کہ جب آپ ایز اے نیو امیگرینٹ یا فرسٹ ٹائم بائر آپ اس کنٹری میں آئیں تو آپ یو مسٹ ٹیک اونرشپ. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اونرشپ لے لیں تاکہ رینٹل سے آپ ہوم اونرشپ پہ آئیں, اور پھر بعد میں آپ انویسٹمنٹ کی باتیں کریں اپنے بچوں کے لیے, اپنے سیکنڈ جنریشن کے لیے. یہی اس پروگرام کا مقصد ہے کہ آپ کو سکسیس سٹوریز ہم بتائیں, آپ کو یہ بتائیں کہ سکسیس سٹوریز کیا ہے, اور اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یو ہیو ٹو واچ ایوری ویک ٹو بائی لو اینڈ سیل ہائی بائی زیا عباس, تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ انفارمیشن ملے. آپ اسکرین پہ ای میل دیکھ سکتے ہیں, ای میل پہ ہمیں لکھیں کہ آپ کو پروگرام کیسے لگا, آپ اپنی رائے دیں ہمیں, اور ساتھ ساتھ میں آپ کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں اس پروگرام میں, کن کو دیکھنا چاہ رہے ہیں, اور اگر آپ خود انٹرسٹڈ ہیں, اگر آپ خود ایک سکسیس سٹوری ہیں تو ضرور ہمیں کانٹیکٹ کریں تاکہ ہم آپ کو اس پروگرام میں آنے کا موقع دیں. فار دا ٹائم بینگ مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.